Good morning, student. My name is Neha Ishrat. I am your computer teacher. I hope you are aware with me. Now, today we'll start with the new chapter, that is a computer system. We'll hope you have read this chapter at your home. It is very interesting chapter. Okay, and some parts you have read in class second also. It's just a revision of that part, and you are also aware with the parts of the computer, isn't it? Okay, let's start. What is a computer? Okay, and we have some of the basic points like see. Okay, see, we start with the chapter that is computer system, and here in this chapter we will learn what is computer, computer system, hardware and software, and its characteristics. Okay, now the next thing is in the previous class we learned how the computer works. Computer on the basis of IPO cycle. In the IPO cycle, you know, na, input, processing, and output. There are many things that we have learned in class second. Okay, now in class third, we will learn what is a computer. A computer can be defined as an electronic device that can accept, store, and process data to produce the required result according to their directions. Computer works on the basis of input, process, and output cycle, that is IPO cycle. See here, input takes data and instruction which we feed into using input device. Input device say what are the input device? Keyboard, scanner, mouse are the input device, isn't it? जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं. किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. ठीक है, जिस जिस प्रोसेस के थ्रू और जिस हार्डवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस. बट जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाता है दैट इज़ नोन एज इनपुट. अंडरस्टूड? बिटवीन द टू इनपुट डिवाइस एंड इनपुट इज डिफरेंट. द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. व्हाट यू मीन बाय प्रोसेसिंग? जो कंप्यूटर वर्क करता है, जब जैसे ही हमने इनपुट दिया उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये वर्क करना है, तो जो कंप्यूटर वर्क करता है उस पर अपना प्रोसेसिंग करता है, दैट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग. प्रोसेस मीन्स स्टोर्स एंड प्रोसेस द डेटा यूजिंग द CPU. CPU के थ्रू वो प्रोसेस करता है. इजंट इट? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर ना. CPU क्या है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है. एंड द लास्ट पार्ट इज आउटपुट. See here, output gives the result using output device. Output क्या करता है? It gives the results to you. जो final result आते हैं हमारे, जो final solution होते हैं उसको बताता है. And this all together form IPO cycle. इसको all together क्या बोलते हैं? IPO cycle. Input, output, input, process and output. Okay, I hope this much you have learned or you have remembered the IPO cycle and what is computer. सारे काम हम खुद से नहीं कर सकते, हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है. कई जगह पे कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल होते हैं, नॉट इन योर ओनली होम्स बट इन अदर स्कूल्स, बैंक्स, ऑफिसेस, सब जगह यूज़ होता है ना कंप्यूटर, जिसके थ्रू से हम वर्क करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम. A computer has a monitor, mouse, keyboard, and a case that contains other important parts. These physical components are called hardware. These are the parts of the computer system that we can touch, see here. Computer is divided into two parts. Computer कितने पार्ट में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में. दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो पार्ट कंप्यूटर का हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, दैट इज़ नोन एज हार्डवेयर. ओके, एंड इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू हार्डवेयर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम. और जिस हार्डवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर. एंड दीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. और यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के क्या बनते हैं आपके? कंप्यूटर. अंडरस्टूड दिस मच? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच. लेट्स मूव फर्दर. ओके,
फिजिकल कंपोनेंट्स को भी आप क्या बोल सकते हो, हार्डवेयर. See through the chart. Computer system, it is divided into two parts, hardware and software. You may wonder how the computer hardware knows what is supposed to do. The answer is that we give it instruction in the form of software and the computer works accordingly. हम लोग सोचते हैं ना कि हार्डवेयर कैसे अपने आप काम कर लेगा, कैसे वर्क कर लेगा. कंप्यूटर के पास तो इतना ब्रेन है नहीं, लेकिन ब्रेन उसके पास होता है, लाइक CPU. जो भी इंस्ट्रक्शन हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर. बट जिस पे वो वर्क करता है, दैट इज़ नोन एज हार्डवेयर. अंडरस्टूड? ओके. सी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट. वो आपस में एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. Depend. Without software, computer cannot work, and without hardware, no software can run. If the hardware is not there, then the software is of no use. This can be understood with the help of given example. See here. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ना. बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता. लाइक a computer system plays songs which are stored in CD or DVD. Here computer, CD, DVD and speakers are all hardware devices while the songs are software. आप जो कंप्यूटर पे सॉन्ग सुनते हैं ना, सभी सुनते होंगे कंप्यूटर पे सॉन्ग, सभी आते हैं. तो जो सॉन्ग प्ले होता है कंप्यूटर पे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर. बट जिसके थ्रू सॉन्ग्स या वॉइस बाहर आती है, लाइक स्पीकर्स, योर वूफर्स, दीज आर योर हार्डवेयर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज लिसनिंग द सॉन्ग नाउ इन द पिक्चर. ओके, लेट्स मूव फर्दर. See, and CD and DVD, it stores songs in your computer. Okay, ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में सॉन्ग स्टोर करते हैं. What is hardware? All the physical device of a computer that we can touch and see are called hardware. They can be divided into different categories according to their functions. See, ऑल द फिजिकल डिवाइस, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सी, फर्स्ट पार्ट इज़ योर इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, लाइक कीबोर्ड, माइक. These are used to enter input into the computer. ये सब किस लिए यूज़ होते हैं, आपके कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, डेटा देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. These are used to process input receive. प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं, ठीक है, वो उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है. ठीक, जब जैसे ही वो वर्किंग अपनी कंप्लीट कर लेता है कंप्यूटर, देन इट गिव्स यू आउटपुट. वो क्या देता है, फाइनल रिजल्ट देता है. These display the result of computer processing. Whatever the processing is done in the computer, and then output will give the final result. Understood this IPU cycle? Okay. Storage device. Storage device helps in storing the information, जिसमें हम information store करते हैं. Okay. Now move to the next part, that is software. A very interesting part. Software is a set of instruction that tells the computer how to perform a specific task. सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, कंप्यूटर को बताता है कि आपको काम कैसे करना है. जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को बताता है ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. इन द सेम मैनर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ओके, okay. Software is also of two types, like application software and system software. Here first is application software.
System software. System software is a software that manages and control computer hardware. जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. System software basically allows the different parts of a computer to work together. आपस में साथ में काम कैसे करते हैं वो बताता है. Without the system software, computer cannot operate a single unit. एक भी काम वो खुद से नहीं कर पाता. एक भी काम अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, if it will not be present in the computer, then computer cannot perform any task. Sorry. Windows, Ubuntu and Mac OS are few examples of system software. ये इनबिल्ड होते हैं कंप्यूटर में, जिसकी बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करते हैं. Understood? Okay. See, Windows XP is given, Windows 7 is given, now Windows 10 is launched. Okay, these are all your system software. Ubuntu is a very old version of your operating system. Now in the present we are using Windows 10. Now come to application software. Application software designed to perform a specific task. It helps the user as a tool for easy operation of a particular type of task. MS Word, MS PowerPoint, KitPix, Casa, Windows, Media Player are some examples of application software. ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करते हैं, सपोज इफ़ यू वांट टू प्ले अ गेम्स, तो गेम्स का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तभी तो गेम खेल पाओगे. दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सपोज इन मोबाइल्स आप डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करते हो ना, व्हाट्सएप का हो गया, गेम्स का हो गया, देन दीज आर कॉल्ड व्हाट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या स्टोर करते हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होता है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू हैव टू डाउनलोड इट. Okay, now come to the characteristics of a computer. A computer is an electronic machine. It has following characteristics. First characteristic is speed. Computer works at greater speed. It can do billions of calculation in a few seconds. कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और वो बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं. ओके. मेमोरी. जितनी हमारी मेमोरी आप लोग भूल जाते हो ना कोई भी क्वेश्चन आंसर लर्न करने के बाद, लेकिन कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है. कंप्यूटर बहुत पावरफुल होता है. कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेफली इन इट्स मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज. दैट इज़ वाई दे आर सो यूजफुल. इसीलिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी वो एक साथ स्टोर करता है. ओके, द थर्ड पॉइंट, कम टू द थर्ड पॉइंट, एक्यूरेसी. कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट मशीन. एकदम परफेक्ट एक्यूरेट आंसर आपको देता है, कोई भी उसमें गलती नहीं होती. एंड द लास्ट इज इंटेलिजेंस. कंप्यूटर्स can do the same job again and again without getting tired or bored. कंप्यूटर एक ही वर्क को बार बार कर सकता है. हम लोग क्या करते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना, एक ही काम को बार बार करते हैं, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ intelligence. Okay, then versatility. Computers can perform different types of job at a time. बहुत सारे काम वो